It was page number 85 of pupils book. Give your answer in kilometers and meters. Very good. So its answer will be 3 kilometer and 135 meters. Walaikum assalam. So the answer of the first part problem will be 3 kilometers and 135 meters. Very good. Okay, second. Who will answer the second one? This is 85, page number 85, pupils book. Page 85, pupils book. Walaikum salam. Who travels a longer distance? बेटा आप किसी और को भी बोलने का मौका दोगे अब्दुल्ला खान? शाहजैन बोलेंगे हाँ शाहजैन बताए सेकंड क्वेश्चन का. Peter travels from London to Munich. Jack travels from London to Brussels. Who travels a longer distance? London to Munich. Peter, very good. Your answer is right. London to Munich is the greater distance. So its answer is Peter. Page number 85. ज़्यादा डिस्टेंस पीटर ने कवर किया है. हु ट्रेवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस. पीटर का डिस्टेंस लंदन से म्यूनिश तक दिस इज मोर देन द डिस्टेंस फ्रॉम लंदन टू ब्रुसेल्स. 300 kilometer is lesser at 300 kilometer. So Peter traveled longer distance. And the first question, how high is the aeroplane above the ground? ग्राउंड से एरोप्लेन कितना दूर है? ग्राउंड से एक व्हील है दैट इज 135 मीटर्स और फिर व्हील से एरोप्लेन 3 किलोमीटर है. सो सो इट्स आंसर इज 3 किलोमीटर एंड 135 मीटर हाई. The aeroplane is 3 kilometer 135 meter high than the ground. Now come to page 119. 119. Okay, these are the questions. The first question is the mass of tomatoes, and the second question is mass of the bag of onion. Ji. Okay, who will answer? Yes, Affan will answer. Affan will answer. Okay, mute all of you. Mute yourself, and I will ask by name. Yes. Okay. Affan. क्या है अफान इसका? The mass of bag of potatoes. नहीं समझ आ रहा अफान को? ओके अब्दुल्ला खान आफरीदी कौन है ये? अच्छा ये तो अब्दुल्ला खान है. शाफे बताएंगे. शाफे बताएं. शाफे इस पे क्या रीडिंग आ रही है आपको समझ आ रही है? यहाँ पे रीडिंग क्या आ रही है स्केल में? व्हाट इज द रीडिंग हियर इन द मेजरिंग स्केल? यस दिस द नीड. पेज नंबर 119 pupils book. Page 119 pupils book. Yes. Okay. 119. वासिफ बताएं. वासिफ बहुत वेस्ट कर रहे टाइम को. वासिफ बताएं आंसर इसका. ओके बताएं शाफे. 750. वेरी गुड. ओके नाउ अब बताएंगे. वासिफ बताएंगे सेकंड वाले का. यस वासिफ. 350. Very good. Now move to the next page now. All of you move to the next page. Now here we have to write the suitable unit. Okay, who will now? I ask it from
Now 120, 120 now. Okay. You asked Ibadur Rahman बताएंगे. Ibadur Rahman, yes. Which is a suitable unit of measure for each object? Up till now, we have learned gram and kilogram. We know that gram is a smaller unit and kilogram is a larger unit. So 1000 grams is equal to 1 kilogram. Okay. So 150 सेंटीमीटर तो लेंथ की होती है. यहाँ पे तो आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं. या तो ग्राम आएगा या किलोग्राम आएगा. ये बात बता रहे. ये बात क्योंकि सब लोग Okay, I'm going to mute all of you because you are not obeying the rule of the class and everybody is talking without permission. So everybody is now mute. So now I ask it from Wasif Salim, unmute yourself and tell me what should be here, 150 kilogram or gram? Gram, very good. And in the scooty, it will be 4 kilogram. Okay, good. Now I'm taking Abdullah Ahmed for the next question. Yes, what is the mass of each object here? There is a cake. So mass of the cake, Abdullah Ahmed. How many kilograms and how many grams? 2 kilogram, 500 grams. Very good. And the mass of the bag of carrots is dash kilogram and dash grams. Yes, 3 kilograms and yes, good. 3 is correct. 600 gram. The needle is one small division after the 500, so it will be 600 grams. So its answer is 303 kilogram and 600 grams. Now I'm taking another student. Now I'm taking Shafe. Shafe, unmute yourself. Yes, Shafe बताएंगे. The masses are ordered from lightest to heaviest. So look here, some of the masses are given in grams and some are in kilogram. This is one, this is second, the third. What are the possible numbers in the boxes? जी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं शाह पे. पहले में है 350 grams, the second 1 kilogram, third is blank and fourth is 3 kilogram 500 grams. जी शाह पे. शाह पे को नींद आ रही है, नाश्ता भी नहीं किया मुझे लग रहा है. जी इसके दरमियान हम क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम और 3 किलोग्राम 500 ग्राम्स के दरमियान की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे. तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे. देखिए ये सबसे लाइटर है, सबसे हल्का है, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, फिर सबसे ज़्यादा हैवियर, हैवीएस्ट. सो इससे कम लिखेंगे 3 kg 500 से कम लिखेंगे और 1 kg से ज़्यादा. तो कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं हम यहाँ पे. बताओ शाह पे. 2 kg लिख सकते हैं और ग्राम्स पे कुछ भी लिख दें हम, 500 लिख दें. वेरी गुड, शाबाश बेटा. Okay, now we have the word problems. Now we have the word problems of the mass on page 124. So all of you open page 124 of pupils book. 124 of pupils book. The first question is the mass of a sack of flour is 500 grams. A sack of rice is 100 gram lighter than the sack of flour. What is the mass of the sack of rice? Yes, I am looking at your videos. Who want to tell this answer? Wasif is raising his hand. And okay, I am taking Wasif for the answer. Abdullah Ahmad is raising his hand.
So Wasif, unmute yourself and tell me how we can find the answer of this question. What is the mass of the sack of rice? Mass of the sack 100 minus करेंगे. The mass of sack of flour is 500 gram and sack of rice is 100 gram lighter. So 400 हो जाएगा. We will subtract here 500 and 100 is subtracted from 500. So this will be 400 gram. And what is the next question? Vasif, what is the total mass of the sack of flour and sack of rice? दोनों मिला के कितने हो जाएंगे वासिफ? 900. Very good. 900 gram. Okay, now I'm taking Abdullah Ahmed for the next question. Yes, the mass of a jaguar is 80 kilogram, 500 gram. The mass of a deer is 54 kilogram, 100 gram. What is their total mass? जी. What do we do first? You बताओ कि first आप बताएं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे. What do we do here? What we will do here? Yes, आसिफ नहीं अब्दुल्ला बताएंगे. कैसे बताया आपने? We will add we will add the two quantities. Kilogram grams is 600 or 4 8 plus 530. So its answer will be 134 kilograms and 600 grams. ठीक है, दोनों को हम ऐड कर लेंगे. किलोग्राम्स को ऐड अलग करेंगे.